I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2. That is managing files and folders. How to manage the files and folders in computer. So let's begin with this lesson. Here, what are files and folders? Files क्या होती है? So files, any work you do on your computer stored in a file. जो भी work आप कंप्यूटर पे करके कोई लेटर भी टाइप करा, कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी सेव करा, that are known as files. File is a collection of data. File क्या होता है? Collection होता है आपके data का. Each file has different name and is represented by different icon. हर file का एक different name होता है and वो कैसे represent होता है? different icon से. Now what are folders? जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स सेव होती हैं. A folder is just like a bag. जैसे आप बैग में बहुत different फाइल्स को रख सकते हो. It is used to store a group of files. एक ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है. You can organize your work by keeping similar files in one folder. आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने वर्क को एक सिमिलर फोल्डर में फाइल्स को रख के. Now what are File Explorer? File Explorer is an application that help in viewing and managing files and folders. जो help करता है view करने में, manage करने में files और folders को. It provides a graphical user interface for accessing the file system. ये graphical user interface provide करता है access करने के लिए आपके file system को. You can open File Explorer using any of two methods. दो methods से open कर सकते हो. आप search कर सकते हो अपने start button पे जाके. Method 1 क्या है? Click on the start window button and File Explorer option को search कर सकते हो. Method 2 क्या है? Just click on File Explorer icon on the taskbar. जो आपके taskbar पे File Explorer icon होता है उस पर just click कर सकते हो. आपकी File Explorer window open हो जाएगी. So this is the navigation and address bar on your File Explorer window. This is the ribbon. This is your search box. This is your details pane. This is your left pane. This is your right pane, and this is known as the status bar. Now let's talk about quick access. What do you mean by quick access? It is a vertical ribbon which shows a list of frequently used folders, and while a vertical ribbon होता है जो क्या show करता है जो आपने frequently use कर रहे हैं अपने folders को, recent files को show करता है. Next is ribbon. Ribbon is used to manage your files and folders, reveals hidden commands quickly. ये reveal करता है hidden commands को quickly. आप यहाँ पे you can copy, move, delete, rename and make a host of other tasks using the ribbon. Next is navigation and address bar. So you can use these to navigate smoothly through a folders hierarchy or back and forward between folders. The address bar also has a breadcrumb menu. Address bar में क्या होता है? breadcrumb menu होता है that makes it easy to navigate. जो easily navigate कर पाता है different folders path पे. Next is search box. Use the search box to find files stored in current folder. आप search box को use कर सकते हो files find करने के लिए अपने current folder में. Next is left pane. It is known as navigation pane. It's from navigation pane में क्या आता है? Displays all kinds of locations such as this PC folder, device and drives connected to your computer and other folders on your computer. Next is right pane. It displays folders. It displays other folders kind of files of the selected folder in the list. Next is details pane. It shows the most common properties associated with the selected file. Most common properties को show करता है जो associated होती है आपकी selected file से, like author, size and date. You will last change the file on. ये show भी करता है कि कब आपने file को last change किया, date आ जाती है आपकी, etc. Status bar. It displays the total number of items in a location. कि कितने एक location पे कितने total number of icons हैं और the numbers of selected items show करता है and their size. So creating a folder कैसे create करता है एक folder को? To create a folder, you have to follow some steps. First, you have to click on the drive. आपको पहले drive पे click करना और the folder is in the left pane of File Explorer in which a new folder is to be created. जहाँ पे आपको new folder create करना है वहाँ click करना है. Then a content menu opens. एक content का menu open हो जाएगा जो pointer को ले आएगा new options पे लेके जाना है pointer को. Click on the folder option. आपको folder option पे click कर देना है. Then you have to type any name. वहाँ पे आपको कोई भी name type करना है. Project का name जो भी डालना चाहते हो आप. In place of new folder name and press the enter key और आपको enter key को press कर देना. A new folder will appear in the right pane. जो new folder होगा right pane में appear हो जाएगा. Type any name in the place of new folder. कोई भी name type कर सकते हैं new folder की जगह पे and you just have to press the enter key. Renaming a file folder कैसे rename करता है? You can change the name of an existing file or folder. आप existing file और folder का name को change कर सकते हो. To rename a file or folder, follow these steps. First, you have to click on the file or folder you want to rename in the right pane.
आपको पहले क्लिक करना है जिसको आपको रीनेम करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शंस इन द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, देन यू टाइप द न्यू नेम फॉर द फोल्डर। आपको न्यू नेम टाइप करना है फोल्डर के लिए एंड प्रेस करना है आपको एंटर की को। आफ्टर दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। कैसे कॉपी करते हैं फाइल और फोल्डर को? So first you have to click on the first copying a file or folder refers to place it in another location without removing it from its original location। ये क्या करता है? रेफर करता है एक पेज को दूसरी लोकेशन को उसको ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट करे बिना। To copy a file or folder from one place to another, follow this step. First you have to click on the file on folder that to be copied। आपको पहले क्लिक करना है जिसको आपको कॉपी करना है, देन क्लिक ऑन द कॉपी टू। जो अगर आप राइट क्लिक करोगे कॉपी टू ऑप्शन आ जाएगा इन द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हेयर ऑन द होम टैब एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन अप हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है? चूज लोकेशन ऑप्शन को क्लिक करना है, देन आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉपी। आपको कॉपी बटन पे क्लिक कर देना है। नाउ हाउ टू मूव अ फाइल और फोल्डर। मूविंग अ फाइल और फोल्डर रिफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ इट, कि कैसे शिफ्ट करते हैं उसके ओरिजिनल लोकेशन से अनदर लोकेशन पे। टू रिमूव अ फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर टू बी मूव। पहले आपको क्लिक करना है फाइल और फोल्डर को जिसको आपको मूव करना है, देन क्लिक ऑन द मूव टू ऑप्शन। मूव टू ऑप्शन पे ऑर्गेनाइज ग्रुप में क्लिक करना जो होम टाइप पे लेवल है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन अप हो जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द चूज लोकेशन ऑप्शन। आफ्टर दिस सिलेक्ट द लोकेशन, देन क्लिक ऑन द मूव बटन। आपको मूव बटन पे क्लिक कर देना है। नाउ डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। कैसे डिलीट करते हैं फाइल और फोल्डर को? To delete a file or folder, follow these steps. First, you have to click on the file or folder to be deleted. आपको क्लिक करना है फाइल और फोल्डर को जिसको आपको डिलीट करना है, देन क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑन द होम टैब। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन अप, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। Select the recycle or permanently delete options and recycle or permanently delete ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। Restoring a deleted file or folder कैसे रिस्टोर करते हैं? The deleted file folders can be restored from the recycle bin। इसको आप recycle bin से easily restore कर सकते हो। To restore a deleted file or folder, follow these steps. First, you have to open recycle bin folder and click on file folder that you want to restore। आपको click करना है जिसको आपको restore करना है, then you have to click on the restore the selected items, opens options in the restore group and it manage the and on the manage tab under recycle bins tool। Now viewing file folder कैसे view करते हैं? Window provide many ways to arrange and identify your files। तो बहुत सारे ways provide करता है आपको identify करने और manage करने के लिए आपकी files को। While you are viewing them, the information can be viewed in different modes। जब आप इनको view कर रहे हो different modes में आप information को देख सकते हो। By selecting the desired view option in the layout group on the view tab, extra large and large icons भी open up होते हैं। They display gigantic and large icons। gigantic और large icons को display करता है files और folders के। These tools can be very useful when working with images and video files। Now let's talk about medium icons। Medium icons view display the files and folders as medium-sized icon, giving you a better idea of file context। Small icons view display files and folders small icon। ये files और folder को small icons पे preview करता है। Of its contents, the file name is displayed next to the icon। Next to the icon file name display होता है। List view displays the content as a list of files। It is list view क्या होता है? Display करता है content as a list of files or folder names preceded by small icons। This view is useful in your folder contains many files। जो view होता है useful होता है, इसमें क्या होता है बहुत सारी files होती है। You want to scan the list of file for a file name, you can sort your files and folder in this view। आप sort कर सकते हो अन्य files और folders को इस view में। Now let's talk about details। Details view provide detailed information about your files and folder। Detailed information provide करता है आपकी files और folders से related। इसमें names included होते हैं, types, size and data modified। Next is size। Dice view display the files and folders medium size icon। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है फाइल्स और फोल्डर्स को मीडियम साइज आइकन पे। ये डिस्प्ले भी करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन को, फाइल्स को जो प्रेजेंट होती है डिफरेंट साइज पे एंड टाइप पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट। Contents view display each file and folders on a separate row। ये क्या करता है? each file और folder को separate row में display करता है with their detailed information, date, modified size और author। इनकी detailed information available होती है। So that's all for this lesson। I hope you all like the explanation of this lesson। Thank you and have a wonderful day।